Hey friends, welcome back to my channel. So in this video also we'll discuss about phrasal verbs. So in this video we'll learn about 7-8 new phrases जो अपने daily life में use कर सकते हैं. कुछ new होंगे, कुछ आप already use कर रहे होंगे तो हम उनका new meanings जानेंगे. Beginners और intermediate कोई भी उसको use कर सकता है. So let's get started without further ado. Okay, so first one we have hang on. Hang on का पहला मीनिंग जो है hold tightly, किसी भी चीज को tightly hold करने के लिए आप इसको इन situations में यूज कर सकते हैं. Let's say कोई गिरने वाला है या कुछ एयरप्लेन क्रैश, कार क्रैश, और मे बी आप नॉर्मल चीज किसी को कुछ चीज गिरने वाली है, उस सिचुएशन में भी आप उसको कहते हैं hang on to that. मतलब उस चीज को आप कस के पकड़ लीजिए, एक बार अच्छे से hold tightly. So आप hold tightly मतलब इनडायरेक्टली आप होल्ड टाइटली भी यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, बट हैंग ऑन इज समथिंग you can just a phrasal verb you should be aware of, like if people use in front of you, आपके सामने कोई यूज करता है तो इसका मतलब सेम होल्ड टाइटली होता है. एग्जाम्पल जो हमारा है hang on we are going to crash. किसी चीज को अच्छे से, लाइक आप कार में है, hang on we are going to crash. किसी चीज को अच्छे से पकड़ लो because we are about to crash, और we are about to crash, you are about to crash in someone. So नॉर्मल चलते टकराने के लिए, अवॉइड करने के लिए hang on to something आप उसको यूज कर सकते हैं. सेकेंड जो आपका मीनिंग है वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम. लाइक अगर आप किसी को वेट करने के लिए बोलना चाहते हैं तो you can, instead of you saying please wait for me and all something, or wait I'm late, you can say this hang on I'm not ready. So you know, right, phrases are most commonly, you know their meaning in simple words, simple language में आपको meaning पता होगा, but phrases just make your sentences much more cooler and you feel okay, you have a know a lot, your vocabulary is enhanced and all, right? So second meaning is hang on I'm not ready yet. Please wait for me. आप किसी को कह सकते हैं it's on 4, please wait for me 5 minutes, hang on I'm not ready, मैं अभी ready नहीं हूँ, 5 मिनट के लिए मेरा wait करो. तो just you can just say hang on I'm not ready. Okay, नेक्स्ट इज योर हैंग अप. हैंग अप जो फ्रेज है, फर्स्ट मीनिंग है किसी भी चीज को हुक से टांगने के लिए. सो बेसिकली हैंग अप का मीनिंग इज टांगना फ्रॉम अ हुक. सो फर्स्ट एग्जांपल इज आई एम हैंगिंग अप माय कोट बिहाइंड द डोर. मैं डोर के पीछे अपना कोट टांग रही हूँ, मैं टांग रहा हूँ. So or you can use I'm hanging up my coat on the wall. Anything, you can make your own sentences always and come up with new, right? Please share those in comments if you have any questions, or if you want to share any of your sentences with others. Okay, let's move on to the next one, which is end a phone conversation by cutting the connection. So this is very common. You use it जब आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, आपका कोई फोन आगे से काट देता है. सो एग्जाम्पल में जैसे है शी ऑलवेज हैंग्स अप ऑन मी, वो हमेशा मेरा फोन काट देती है. राइट, कनेक्शन पे आप फोन बात कर रहे हैं, बीच में सडनली यू कैन से ओह स्ट्रेंज शी हंग up on me. So hang का second form is hung, right? So she hung up on me, you can also say like that कि oh I don't know, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे but strangely this is strange, एकदम से उसने फोन काट दिया. So it has two meanings, one to hang from hook, another is to end telephonic conversation. Again, next one is put off. Put off is used first thing to postpone something. Let's say आपका कोई event था, we are putting it off for 2 weeks. तो हम उसको अपने event को 2 week के लिए postpone कर रहे हैं. तो postpone को आप put off भी कह सकते हैं. Example, they can't put off a decision much longer. So examples which are there, those are little tough, and which I give like verbally, those are quite very handy and easy. So you can, it's better if you listen to this and then look at this, so you get at least 2 examples at a time, right? So this means वो अपने डिसीजन को बहुत ज्यादा देर तक डिले नहीं कर सकते. अगर कुछ उनको डिसाइड करना है, they have to do it quick, तो उनको जल्दी करना होगा. They can't put off a decision much longer. So मतलब अपना डिसीजन पोस्टपोन नहीं कर सकते, ज्यादा देर के लिए डिले नहीं कर सकते. You can also say a delay is not right, like also that it means the same, but it will be more relevant to postponing something. Another is, this is I feel like this should be a new one for you guys, is distract someone. Put off is also used when you want to use just distract kind of meaning in some way in sentences, like this one. Let's look at an example. Don't put me off, I'm trying to concentrate. मेरा ध्यान मत भटकाओ और मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं अभी किसी चीज पे फोकस से कंसंट्रेट करने की कोशिश करूं. लेट्स से आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड योर समवन इज डिस्टर्बिंग यू. ओह प्लीज डोंट पुट मी ऑफ, आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माय वर्क, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस क्विकली. You can use it like this. Okay, let's move on to the next one, which is your pull off.
पुल ऑफ का मीनिंग है सक्सीड इन अचीविंग और विनिंग समथिंग डिफिकल्ट। जब आप कुछ डिफिकल्ट या कुछ होता है, आपको लग रहा हो कि कोई अचीव नहीं कर पाएगा या आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आप उसको अचीव कर लेते हैं, आप उसको जीत लेते हैं। Then let's say किसी competition में you are hoping okay your this friend will not win, someone else will win, and then you see okay this is something strange, how is it possible that person has won? So इस kind of situation में कि आपको उम्मीद नहीं होती but वो बंदा जीत जाता है because वो आपको लगता है थोड़ा सा difficult है, so there are less chances of winning that. So he pulled off a brilliant first round win, कि उसने जो फर्स्ट राउंड में जीता बहुत ही अच्छी तरह से वो जीता। ही पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट फर्स्ट राउंड विन, फर्स्ट राउंड की जो जीत थी वो बहुत अच्छे से हासिल की। You can put it like that. Pulling off it, succeed in achieving or winning something. So it's kind of, you can say, somebody's appreciation because pull off किसी difficult चीज को achieve करना होता है. So she pulled off that dress very well. उसने उस ड्रेस को इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं बिकॉज दैट इज समथिंग अ काइंड ऑफ टास्क राइट, कि वो ड्रेस को पहन पाना बहुत मुश्किल था या उस पर अच्छा लगना बहुत मुश्किल था, पर उसने बहुत अच्छे से किया। शी पुल्ड ऑफ दैट ड्रेस ब्यूटीफुली। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। Let's move on to the next phrase, which is pull yourself together, which means recover control of one's emotion. Pull up yourself together mostly आप किसी को जब कोई emotionally disturb होता है या अपने थोड़े से होश खो देता है, आप तब यूज करते हो। Let's say somebody is crying and all, but उनको उसके बाद टाइम कम है, कुछ काम आप ऐसे कर सकते हैं, like somebody is crying and they have an exam in 5-10 minutes, then you can say please pull yourself together, you have an exam to do, you have an exam to take, to give whatever, like इस तरह के आप सेंटेंसेस में उसको प्लीज अपने आप को संभालो, बेसिकली जैसे हिंदी में हम बोलते हैं प्लीज अपने आप को संभालो, तुम्हें अभी ये भी करना है, प्लीज पुल योरसेल्फ टुगेदर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स एज वेल, तुम्हें बच्चों का ध्यान भी रखना है, and you have got to pull yourself together and find a job. अपने आप को संभालो, जैसे किसी की जॉब छूट गई and that person is very upset or depressed, उस सिचुएशन में आपको ये यूज कर सकते हैं, please pull yourself together, you have to find a job as well ahead. Okay, so this is in simple words just getting a hold of your emotions. Now, next one is come across. Come across, first thing is to meet or find someone or something by chance. जब आप कुछ by chance आप उसके लिए नहीं ढूंढ रहे थे, but let's say किसी में आप चलते चलते रास्ते में किसी को मिल गई, पुराने फ्रेंड को, then you can say oh I came across him yesterday. मैं उसको by chance we were not planning to meet or something, but हम अचानक से रास्ते में मिल गए। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है I came across these old photos recently. अभी recently मेरी ये old photos थी जो मुझे मिल गई, by chance मुझे पुरानी फोटो मिल गई अभी कुछ दिन पहले। So this is what it means, I came across these old photos recently. अभी कुछ दिन पहले ही मुझे ये पुरानी पिक्चर्स मिली। Another one is appear or sound in a specified way, give a specified impression. So come across, जैसे अभी हमने देखा कि किसी चीज को by chance मिल जाना और उसके साथ साथ किसी चीज का बहुत अच्छे से उभर के आना, तो you can say it as like उभर के आना, come across का हिंदी में कह सकते हैं। He has always come across as a decent guy. वो हमेशा एक अच्छे decent या अच्छे इंसान की तरह उभर के आया है। She has always come across as a decent girl. This मतलब हिंदी में you can say उभर के आना, कि आप कभी भी यूज करना चाहें तो you can keep it as come across. He has always come across as a decent guy. Okay. Next one is taken. Taken is like cheat, fool or deceive someone. So taken का मतलब है कि किसी को धोखा देना, किसी को बुद्धू बनाना, like that. Example में nobody was taken in by his amusing story. So the example means is कि लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, आई थिंक ये आपने बहुत बार सुना होगा, आपके फ्रेंड्स होते हैं, कोई कहते हैं ना लंबी लंबी स्टोरीज हाँक रहे होते हैं कि लाइक ओके ये हुआ एंड यू आर लाइक ओके डोंट ट्राई टू फूल मी, नोबडी विल बी टेकन इन बाय योर स्टोरी। आप तुम्हारी बातों में आना, यू कैन से, कोई भी तुम्हारी बातों में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप टेक इन यूज कर सकते हैं, किसी की बातों में ना आना, नोबडी विल बी टेकन इन बाय योर these talks, right? You can keep it like this. So yeah, that's it. Thanks everyone. I hope you like these phrases. If you like it, please let me know in the comments. Please like the video, share with your friends, and subscribe to the channel.